We are discussing about the chapter number 4, that is the reproductive health. In case of reproductive health, we have already discussed what is the reproductive health. According to the WHO, well-being physical, mental, emotional as well as behavioral. And second case, in case of the reproductive health, number of mithyas is there. After then, there is the number of programs should be applied by the particular NGOs, government, family planning programs, number of other changes takes place. Out of all these things, we have discussed the next part today about the population explosion. What are the reason of population explosion? And second case, after the region of population explosion, how we can control it. So there is the number of methods for the controlling way. So in that sense, we have discussed about the population explosion in the large number. So first of all, what is the population explosion? Population explosion means the rapid growth of the population. In case of rapid growth of population, there is the first thing, the rapid growth of population of a particular species, especially of the human being in the world, since the end of World War II. This can be attributed to the constantly increase in birth rate and decrease in child and infant mortality rate and an increase in life expectancy. This will lead to the increase in stress on all resources. Means the rapid growth of population is the population explosion. And why that population explosion is there? After the Second World War, we have the number of changes there. This can be attributed to a constantly increased birth rate का increase होना, decrease in child, infant and mother mortality rate, death rate का कम होना, increase in life expectancy, यानी life expectancy part का increase होना. All these are reasons lead to the increase in stress on all type of the resources. Next case, in case of that part, causes of the population explosion. Number 1, rapidly decline death rate. Rapidly decline of death rate. Death rate का quickly decrease होना. Second, rapidly decline maternal mortality rate, MMR. मदर मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्रीज हो जाना. रैपिडली डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR. इन्फेंट रेट, डेथ रेट का भी कम होना. मदर की डेथ रेट का कम होना. न्यूबॉर्न इन्फेंट का मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट का कम होना. और रैपिडली डिक्लाइन डेथ रेट का ओवरऑल रेट कम हो जाना. इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज हो जाना. और नेक्स्ट नंबर 5, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज. और सबसे बड़ा एक और रीजन है इंडिया में स्पेशली रिप्रोडक्टिबल एज के पीपल्स हैं, वो लार्ज इन नंबर है. सो देयर आर द 5 मेजर रीजन्स विल बी देयर. जस्ट एक बार वापस देना. उन मेजर 5 रीजन्स में फर्स्ट, रैपिडली डिक्लाइन डेथ रेट का तेजी के साथ कम हो जाना. मदर मोर्टेलिटी रेट का डिक्रीज हो जाना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डिक्रीज हो जाना. इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज. नेक्स्ट, after the causes, the methods to control population explosion. How we can control that population explosion rate? Then we have the number of
what methods will be there? हमारे पास में बहुत सारे methods इसके बारे में. Methods to control population explosion. Population explosion को control करने के methods. Number 1, promote the small families. Small families को promote करें. Promote the use of contraceptive or the barrier methods for the avoiding of fertility. Next, number 3, raise the legal age of marriage. 18 years for female and 21 years for the male. And next, incentivize couples with smaller families. So again, first, promote the smaller families. Second, promote the use of contraceptive methods. Third, raising of legal age of marriage. And fifth is the intensity-wise couples with smaller families. Ideal contraceptive methods. That question is already in CBSE exams also. In previous exams, how we can say that contraceptive methods is the ideal method? Then your answer first should be easy to use. जो कपल इसका यूज करना चाहता है उसके लिए इजी यूजिंग मेथड हो. नंबर 2, शुड बी इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबिलिटी हो उसकी. नंबर 3, शुड बी इफेक्टिव, शुड बी इफेक्टिव, इफेक्टिव भी हो, इजी अवेलेबिलिटी हो, इजी टू यूज हो, शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट्स ऑन द कपल्स हेल्थ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, शुड बी यूज्ड रिवर्सिबल, उसको बार बार यूज किया जा सकता हो, एंड शुड नॉट इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव्स एंड डिजायरेबल एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो अगेन, फर्स्ट, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मींस शुड बी इजी टू यूज, इजी टू यूज, इजी टू अवेलेबल, easy to or not, should be effective, not the side effects, should be reversible or not interference with the sexual drives. So all these are the characteristics of the ideal contraceptive methods. Next case, the methods of contraceptive methods. There is a totally 6 methods are there in your textbook. Definitely 4 methods are given. Just we have classified all these methods in different groups. How we can use these methods? First, natural or the traditional method. Second, barrier methods, as well as barrier methods that is also known as the physical method. Physical methods. IUDs, intrauterine devices, that is only for female. Only for female. Oral contraceptive methods, that is also known as the chemical methods. ये दोनों के दोनों methods जो दे रखे हैं वो chemical method है. Oral contraceptive method and injectable or the implants, they are the chemical methods. And next is the surgical methods. And surgical method is the permanent method. Only out of all these 6 methods, the 6th number method is the permanent method. So in case of that part, first हमारे पास में totally 6 methods will be there. First, natural method is also known as the traditional methods. Second, barrier methods as well as physical method. IUDs, intrauterine devices for female only for female. Oral contraceptive methods or the injectable or the implants, that is the chemical methods. And last is the surgical method, that is also known as the permanent methods. Surgical is the permanent methods. Now this time we have discussed one by one all these methods with example. So first of all, that is the natural as well as traditional methods. So definitely you have just go through that part, which is also given in your textbook also. Natural methods. It works on the principle of the avoiding the chance of fusion of sperm and the egg. ये कह रहा है कि हमारे पास में नेचुरल मेथड्स में किसी भी टाइप से स्पर्म और ओवम को, एग सेल को फ्यूज होने से रोकना है. नंबर 1, पीरियोडिक एब्सेंटेज. इसमें हमारे पास में
3 मेथड है, ध्यान रखना। नेचुरल मेथड्स में वापस 3 मेथड्स है। नंबर 1 पीरियोडिक एब्सेंटेज, नंबर 1 पीरियोडिक एब्सेंटेज, नंबर 2 आउटर विड्रॉल, आउटर विड्रॉल, और नंबर 3 लैक्टेशन पार्ट, लैक्टेनल पार्ट। These are the 3 methods which are the type of natural methods or the traditional methods. Traditional और नेचुरल मेथड्स में वापस आपके पास में आपकी बुक में बकायदा मार्क करके 3 मेथड्स हैं। पीरियोडिक एब्सेंटेज यानी कपल डे ऑफ 10th टू डे ऑफ 17, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से लेकर के 17 डेज के बीच में इंटरकोर्स न करें, दैट इज द पीरियोडिक एब्सेंटेज। बिफोर और आफ्टर may be possible, only we have just avoid the distance, sorry, continue to distance between the day of 10th to 17, just definitely you have just avoid the fertility. Outer withdrawal, sometimes what happen, number of region will be there, due to that region the interaction or the intercourse between the male and female is there. At that case only we have the one chance, the male have the outer withdrawal is there. Next, number 3 lactational amergy means this is the period of absence of the menstrual cycle, यानी आपके पास में डिलीवरी के बाद 1 to 3 month female have continuously or sometimes 6 month also continuously lactation, milk secretion will be there. At that cases rate of chance of fertility or the ovulation is not takes place, no ovulation during that part, again the fertility is not possible. So but these are not a safety methods, sometimes any mishappening will be there, chance of failure maximum chance is there. So first periodic absentage, second withdrawal, और थर्ड इज द लैक्टेशन अम्ब्रोजिया। एज नो केमिकल आर यूज फॉर द चांस ऑफ साइड इफेक्ट्स, इस तीनों मेथड के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज आल्सो लिमिटेड, लिमिटेशन पे ही इनकी सक्सेस रेट होगी, और चांस ऑफ फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव आर आल्सो हाई, इनके फेलियर के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बैरियर मेथड्स पे, नंबर 2 दैट इज द बैरियर मेथड्स। In case of barrier methods, that is also known as the physical methods. इनको अदर वर्ड्स में हम लोग फिजिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स मींस a particular barrier or the gap is there between the fusion of male and female gamete. मेल और फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूज होने से रोकने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को आप यूज करते हैं, that is the barrier as well as physical methods. So first, in this methods sperm and ovum are physically prevented from the mating. ये mating means fusion. कोई ऐसा बैरियर डिवाइस यूज करते हैं ताकि आपके पास में स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से रोका जा सके, दैट आर द बैरियर मेथड्स। और वर्ड के अंदर अगर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस and maximum rate of using method is there, that is the barrier method. वर्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई मेथड यूज हो रही है, then that is the barrier methods. In case of barrier methods, first is the condoms, that today for male and female both part will be used. Next, and one more part, that is the condom for male and female both the part is there. Both male and female are used disposable. As the use of prevent to contact of not only one more thing is there in case of that barrier methods and the condoms. Not only prevent the fertility, they have also prevent the STD, sexually transmitted disease को भी रोकती है, STD, because reason will be there, the fluid of genital male and female नॉट इन कॉन्टैक्ट, मेल और फीमेल का जो जेनेटियल रीजन का फ्लूइड है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से एसटीडी भी नहीं होती है।
तो एसटीडी से भी प्रिवेंट कर देगा आपको और फर्टिलिटी को भी रोक देगा। एंड यूजेबल ऑफ बेरियर्स ऑफ लाइक डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप, वॉलनट्स are inserted into the female cervix during the coitus to prevent the entry of sperm through the cervical canal region and spermicide cream। इनमें आपके पास में 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला नंबर 1 पे एक तो कंडोम मेथड्स आ जाता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आजकल आ गए। एक आपके पास में सेकंड है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप और वॉलनट्स, और थर्ड नंबर पे स्पर्मिसाइडियल क्रीम आती है जो फीमेल यूज करेगी, जेली का भी यूज कर सकती है, फॉर्म का भी यूज कर सकती है। इन सब के यूज हो जाने की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं, फ्यूज नहीं हो पाते हैं, रेट ऑफ फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्यों, बिकॉज दैट पार्ट इज फंक्शनिंग एज ए बैरियर। तो वापस ध्यान दें, बैरियर मेथड्स में फर्स्ट आपके पास में कंडोम आ जाएगा, सेकंड रीयूजेबल मतलब जिसको बार बार है, यहाँ पर ये ओनली वन टाइम डिस्पोजल है, डिस्पोजेबल है वो तो है कंडोम से, डिस्पोजेबल है वो कौन है, कंडोम से, और रीयूजेबल है वो आपके पास में डायफ्राम्स भी रीयूजेबल है, सर्वाइकल कैप है वो भी रीयूजेबल है, वॉलनट्स है वो भी रीयूजेबल है, और केमिकल फॉर्म में जो यूज किया जाता है स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड का मतलब होता है स्पर्म को किल करने वाला क्रीम, जेलीज और फॉर्म्स। नेक्स्ट देयर इज the next method, second method which is used large scale in the world or especially in case of India also, intrauterine devices, IUD. That method is only used for female and second largest method, first barrier method है और ये है second largest usable methods है। These devices are inserted into the uterus by the doctors or the expert nurses through that vaginal region। इनको बाकायदा आपके बुक में इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, सेकंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और थर्ड आईयूडीज दैट हैव रिलीज द हार्मोन आल्सो। तीनों याद करने अलग अलग आपको बुक के हिसाब से, बुक में भी तीनों दे रखे हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, सेकंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड थर्ड इज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड में आएगा लिप्स लूप, फैगोसाइटिक नेचर ऑफ स्पर्म होता है, स्पर्म को खा जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज लाइक एज कॉपर टी, कॉपर 7, multi-load 375 decrease the mobility or the motility of sperm and sperm becomes the inactive, that's why the sperm have not capable to fuse with ovum। And third hormone releasing medicated IUDs जिसमें आएगा आपके पास में प्रोगेस्टेट, LNG20 make that uterus unstable, unsuitable, यानी जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांट नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती क्योंकि उसकी वॉल होती है वो आपके पास में स्मूथनेस उसका खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी होगी लेकिन इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो हार्मोन रिलीज है वो अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कॉपर रिलीजिंग है वो स्पर्म को मोबिलिटी को रोक देता है, डिक्रीज कर देता है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगी। और नॉन मेडिकेटेड है वो फैगोसाइटिक नेचर का होगा। These devices are ideal contraceptive methods for female for family planning as and are among the most widely used of methods contraceptive। सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जा रहा है। सेकंड फर्स्ट बैरियर मेथड है और सेकंड लार्जेस्ट यूजेबल है वो आईयूडीज है, बट दैट मेथड्स ओनली फॉर फीमेल क्योंकि यूट्रस होता है वो केवल फीमेल नहीं होता, मेल में नहीं होता। नेक्स्ट कॉपर टी का डायग्राम दे रखा है आपको। नेक्स्ट आपके पास में आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज आल्सो नोन एज द what we can say that is the chemical methods also। oral contraceptive method that is also used or also known as the chemical method। कौन से मेथड के नाम से जाना जाएगा? oral contraceptive method is also known as the chemical method। oral contraceptive method that is also known as the chemical method। इसी में एक इंजेक्टेबल है वो भी chemical method नहीं है। oral contraceptive methods में in previous condition we have the use the number of tablets
and the tablets are just consist with the estrogen and progesterone hormone level. That's why that are the chemical. और डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि केमिकल मेथड्स का साइड इफेक्ट, अगर किसी का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होता है फीमेल हेल्थ पे, तो वो है आपके पास में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और द केमिकल मेथड, बिकॉज that methods is responsible for the imbalancing of estrogen and progesterone hormone in female body. क्योंकि इन पिल्स को बनाया जाता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता है। जो टैबलेट्स बनाई जाती है, जो इंजेक्शन बनाया जाता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और वही हार्मोन जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस करता है, उसी को इम्बैलेंस कर रहे हो, मेटाबॉलिक रेट चेंज होती है और उसके हेल्थ के ऊपर नंबर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, हजार्ड्स ऑफ हेल्थ विल बी देयर। सो दैट आर द नेगेटिव। और फर्स्ट टाइम में इस मेथड के लिए जो यूज हुआ था वो आपके सहेली टैबलेट्स यूज हुई थी। इसमें आपके बुक में यहाँ पर इसी में दे भी रखा है, नॉन मेडिकेटेड भी, तो द न्यूअर पिल्स लाइक द सहेली एज ए वीक एंड नॉन स्टीरॉयड। नॉन स्टीरॉयड का मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसको नहीं बनाएगा या लेस साइड इफेक्ट के साथ है। एंड दीज पिल्स वर्क बाय द इनहिबिटिंग ऑफ ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन। ये क्या करते हैं, इनहिबिटिंग कर देता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, म्यूकस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे स्पर्म की एंट्री होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल का मतलब होता है इंजेक्शन। द फीमेल हैव यूज्ड अ पर्टिकुलर इंजेक्शन फॉर द 3 year 4 year एंड नंबर ऑफ इयर्स। द प्रोस्टेट हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन बोथ। फीमेल उसका इंजेक्शन लगवाती है ताकि उसको रोका जा सकता है। इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, या कई बार स्किन के साथ में इस पर्टिकुलर पार्ट को इंजेक्ट भी करवा लेता है, इम्प्लांट्स करवा लेता है, ताकि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज के रेट कम हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड में, इंजेक्टेबल मेथड्स का और ओरल मेथड्स के नेगेटिव इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, दैट इज द सर्जिकल मेथड्स, और सर्जिकल मेथड्स को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। परमानेंट मेथड से सर्जिकल मेथड है। इसमें हम लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। फीमेल है तो फीमेल के लिए, मेल है तो मेल के लिए स्टरलाइज हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी रेट खत्म हो जाती है। एक्चुअल में किया क्या जाता है, मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट को ट्रांसफर करता है, गैमेट को लेके जाता है, उस ट्यूब को या तो बांध दो या उस ट्यूब को आपके पास में डिस्कनेक्ट कर दो। ड्यू टू द डिस्कनेक्शन ऑफ ट्यूब्स, दिस द रेट ऑफ फर्टिलिटी इज स्टॉप। दैट्स व्हाई देयर इज द सर्जिकल मेथड्स और द परमानेंट मेथड्स। तो मेल के लिए फैलोपियन, फीमेल के लिए फैलोपियन ट्यूब को टाइप किया जाता है, डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के नाम से ही, फैलोपियन ट्यूब के नाम से बना है आपके पास में, वो फीमेल के लिए बना है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होती है वो फीमेल के लिए, ध्यान रखना। और वास्ट डिफरेंसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो आपके पास में वास्ट डिफरेंसेज, वास्ट से बना है वेसेक्टोमी। तो याद ये रखना है, वेसेक्टोमी मेथड होता है वो मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी होता है वो फीमेल के लिए। क्यों? फैलोपियन ट्यूब ये रहा है, फैलोपियन से बना है, ट्यूब से बना ट्यूबेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस से बना वेसेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस किसमें होती है? मेल में। तो ये होगा वेसेक्टोमी फॉर मेल, ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हाईली इफेक्टिव मेथड्स है, और इसमें रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। इसमें रिवर्सिबिलिटी के चांस बहुत कम रह जाते हैं। और यही आपके पास में डिफरेंट मेथड्स हो गए, जिसमें 6 मेथड्स थे। नेचुरल मेथड्स, सेकंड बैरियर मेथड, थर्ड आपके पास में आ गया कौन सा मेथड? थर्ड आईयूडीज, फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एंड फिफ्थ is the injectable methods, and sixth is the surgical methods. Or sometime in your textbook they are also given in only 3 forms. First natural method, 4 natural methods, physical or the barrier methods, chemical methods, or one more, that is the surgical as well as permanent methods. And later we have discussed about the MTP, amniostatus, and infertility or the IVF methods in next term. So definitely you have go through my YouTube channel HR Tutorial. Thanks a lot.